Okay. Very good afternoon, children. Today we will start with actual permutation. That is, whatever sums we did in the last lecture, those sums we'll do with the proper formula. Again, two cases: repetition allowed, repetition not allowed. So for both the cases, we'll be learning the formula. Before that, let's understand what do you mean by permutation. So here basically permutation means arrangement of objects. It means I am arranging certain objects, arranging the objects. Okay, arranging the objects. I'll take the very simple example. Suppose there are three benches in a class, and three students. Okay, three benches and three students. Now when the first child goes inside the class, this child will have three choices to sit. This child will have three choices to sit. Correct? He will sit somewhere. Once he sits, the second coming child will have two choices because he has already sat. Then the last one will by default have no choice. He has to sit at the empty place. So by principle of multiplication, I can say number of choices is nothing but 6. That is 3 into 2 into 1. And what is happening here? I am arranging these three people on these three chairs. What I am doing? Arranging these three people on these three chairs. And this arrangement of people on places is called as permutation. Permutation means arrangement, and here A comma B combination and B comma A combination both are counted differently. Means A B बैठा है या B के बाजू में A बैठा है. Both are different scenarios and both we count. Okay, so we get the answer here as 6. This entire scenario can be written in a shortcut form as NPR. I'll write it as NPR, where n should always be a natural number. N should be a natural number. Same way R should be a natural number. R can be 0 also. Also, n should be greater than equal to R. Always n should be greater than equal to R. Now NPR का मतलब है arrangement of n people at R places, or whichever is larger is always n and whichever is small is R. तो यहाँ पर I can say that my n, that is number of people कितना है 3, number of places कितना है 3. So I could have written this as 3p3. I could have written as arrangement of 3 people at 3 places. Arrangement of 3 people at 3 places. Let us done the formula of NPR now. Now NPR, because once we write this, हमें 6 आंसर मिलना चाहिए ना? क्या मिलना चाहिए आंसर? 6. So how to solve this? So NPR का मतलब होता है n factorial upon n minus r factorial. What is NPR? N factorial upon n minus r factorial. Let us verify this. So 3p3 बोला, total I get 3 factorial upon, that is 3 factorial upon, it will be 3 minus 3 factorial, that is 3 factorial upon 0 factorial. What is 0 factorial? 1. और 3 factorial कितना होता है? Everybody knows 6. So my answers are coming correct. It means what we have written is correct. आपने plenty of sums ऐसे हमने solve किए हैं, but now we are changing this into a formula. आया समझ में? Yes. I'll solve one sum based on this. Then we'll go for word problems. ठीक है? यहाँ पर क्या हो रहा है? The people are different. क्या हो रहा है? People are different. That is, when repetition is not allowed, I can say my answer will be NPR. If repetition is not allowed, मेरा आंसर क्या आएगा? NPR. Now if I say that repetition allowed है,
Suppose I want to make a 3-digit number 1, 2, 3 and repetition is allowed. So this place can be filled by 3 ways, this by 3 ways, this by 3 ways. So कितना आ रहा है 3 into 3 into 3, that is 27. Am I right? So if I say that repetition is allowed, if I say repetition is allowed, तो मेरा आंसर आएगा again here 3 लोग थे, 3 people means 3 boxes, so R was 3. And what was my answer? 3 cube. Am I right? My answer was 3 cube. So if you simplify the sums, your answer should be n raised to r. So if repetition is allowed, the answer comes out to be n raised to r. And if repetition is not allowed, it comes out to be npr. These two cases are valid if the objects are different. We can use this formula only when the objects are distinct. Object क्या होना चाहिए? Distinct. मतलब every object unique होना चाहिए. Can you see? All objects are unique. Understood? Yes? Okay. Let's move on to sums now. Let us go with first sum. So np6 is to np3 is equal to 120 is to 1 is given to you. Okay, you can solve this now. Let us see how we can solve. So this can be written as np6 upon np3 120. Correct? Now np6 कैसे लिखेंगे? n factorial upon n minus r factorial whole upon, इसको लिखेंगे n factorial upon n minus 3 का factorial equals 120. ये ऊपर जाएगा और n कट हो गया. So n minus 3 factorial upon n minus 6 factorial equals 120. You know how to solve this. ये बड़ा नंबर है तो इसको एक्सपांड करेंगे तो आएगा n minus 3, n minus 4, n minus 5. I will stop at 6 क्योंकि नीचे क्या है 6 है. Am I right? ये क्या है 120. So cut 3 brackets consecutive type के and in descending order ना, n minus 3, n minus 4, n minus 5. तो हो जाएगा 6, 5, 4. 120 को लिखा मैंने. So by comparison n minus 3 कितना होना चाहिए 6. Therefore n कितना आएगा 9. Understood? Now remaining sums of this type you will solve. I am giving you for practice. We will focus on word problems. Okay? So let us move on to question number 5 of exercise 3.3. Okay? How many 4-letter words? How many 4-letter words? 1, 2, 3. 4-letter words can be formed using letters in the word Madhuri. So Madhuri के spelling में जो letters है उससे 4-letter word बनाना है. First, repetition is allowed. Okay? And second, repetition is not allowed. ठीक है? Now statement parts I will not write. I will just explain the answer. 4-letter word बनाना है. How many letters are here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repetition is allowed. So पहले कैसे करते थे? This can be filled by 7 ways. ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7. तो यहाँ पर देखो ये 7 है, ये 4 है. Which is larger? 7 is larger. Repetition is allowed. So my answer comes out to be n raised to r, which is nothing but 7 raised to 4. The larger number is n, smaller number is r. So if you go by the formula of repetition allowed, since every letter is different over here, so I can use the formula n raised to r, that is 7 raised to 4. Or else हमारा normal तरीका, this place can be filled by 7 ways,
रिपीटेशन अलाउड है, यहां पर भी 7, यहां पर भी 7, यहां पर भी 7, दैट इज 7/4. ओके, नाउ नॉट अलाउड. नॉट अलाउड रहेगा तो आंसर क्या आता था? रिमेंबर, दिस कैन बी फिल्ड बाय 7 ways, 6 ways, 5 ways, 4 ways. Am I right? But यहाँ पर we have a ready-made formula that we have learned today. If repetition is not allowed, objects are different. My answer will be N P R. क्या आंसर आएगा मेरा? N P R. आया समझ में? What will be my answer? N P R. Okay? Yes. Okay. Next sum. Determine the number of arrangements of the word algorithm. इससे नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने हैं. इन दैट द फर्स्ट केस इज vowels are together. Vowels are together. Very important concept, children. Second is no two vowels are together. No two vowels are together. Third case, consonants at even positions, and D, O is the first letter and T is the last letter. If you understand this sum, you can solve maximum problems of this exercise. सबसे पहले forget all these conditions. I want to find how many words I can form. So number of ways I can arrange these letters. Number of arrangements. I want to find first number of arrangements. तो कैसे फाइंड करेंगे? Nothing is repeating in this. All letters are unique. Am I right? ये L है, L. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I have 9 letters. कितने letters है? 9 letters है. और इन्हीं letters को मुझे shuffle करना है. So places भी कितनी होगी मेरे पास? 9. Because nothing is mentioned कि 4 letter बनाना है कि 5 letter. So with 9 letters and 9 spaces, how many arrangements I can make? N P R. क्या मिलेगा? N P R. So जब आप आगे सॉल्व करोगे, N P N का आंसर इज N फैक्टोरियल. रिमेंबर, N P N इज N फैक्टोरियल. तो यहां पर अरेंजमेंट्स कितने आएंगे? 9 फैक्टोरियल. कितने आएंगे? 9 फैक्टोरियल. अंडरस्टूड? If both the numbers are same, the answer is that number का factorial. Okay. Now comes the first condition. Vowels are together. मैंने क्लास में क्या किया है? 3 बच्चों को बिठाना है. Let us say example. 3 बच्चों को 3 बेंचेस पे बिठाना है. A, B, C. बट स्टूडेंट्स ने बोला है सर आप कैसा भी बिठा दो, बट A और B हमेशा साथ में बैठेंगे. क्या है? A और B हमेशा साथ में बैठेंगे. तो मैं क्या करूंगा? A और B का एक ग्रुप बना देता हूं. बिकॉज दे हैव सेड दैट आप कैसे भी बिठा लो, हम दोनों साथ में ही बैठेंगे. सो A, B. So whenever the word comes together, make that people as one group now. Whichever terms are together, assume that as one group. Now ये सिंगल एंटिटी हो गया क्योंकि ये साथ में बैठने वाले हैं. तो ये 1 और ये 1 कितने पीपल हो गए? अभी 2 पीपल हो गए. This one person and this one person. So 2 people. और इन दोनों की चेयर को भी मैं एक ही काउंट करूंगा क्योंकि साथ में बिठाना है. So 2 people can be seated on 2 chairs. 2 people can be seated on 2 chairs in how many ways? 2p2. That is 2 factorial ways. Am I right? 2p2. इनको बिठा तो दिया. अब ये दोनों A और B जो साथ में बैठने वाले थे, अगेन दे कैन शफल लाइक दिस ना. इट कैन बी A, B, इट कैन बी B, A. सो व्हाट आई एम डूइंग? पहले ग्रुप करके निकाल लिया, मल्टीप्लाइड बाय इस ग्रुप का फैक्टोरियल. 2 people can shuffle at 2 places in how many ways? 2 factorial ways. कितना factorial ways? 2. कि 2 लोग हैं, 2 चेयर है. अगेन इसका आंसर आएगा 2p2. ये 2p2 किसका है? शफलिंग ऑफ पीपल ऑफ दैट ग्रुप.
उस ग्रुप के लोगों को शफल करने का आंसर है. सो माय आंसर कम्स आउट टू बी 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल. समझा? आई विल एक्सप्लेन द सेम ओवर हियर. क्या टुगेदर बोला है? वॉवल. वॉवल्स क्या है? ए ओ आई. तो मैंने क्या किया? ए ओ आई को साथ में लिख दिया. नॉट इज लेफ्ट एल जी आर टी एच एम. अब ये ग्रुप है ना, इसे एक काउंट करेंगे. तो 1 2 3 4 5 6 7. अब मेरे पास लोग कितने हो गए? 7, बिकॉज ये ग्रुप बन गया है. तो 7 people can be seated on 7 places in how many ways? So I will say number of ways. Initially कितना आएगा? 7 factorial, क्योंकि 7 people है and 7 chairs है. 7 factorial. Now ये तीनों लोग साथ में चाहिए थे, but these three can shuffle here and there ना. A O I O A I O. So 3 people can shuffle among themselves in 3 factorial ways. In 3 factorial ways. समझा? So 7 factorial into उस ग्रुप का फैक्टोरियल. क्या आएगा? 7 factorial into ग्रुप का फैक्टोरियल. समझा? अब फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हो. कितने लोग साथ में चाहिए थे? 3 लोग थे ना. सो n -2, एक कम करो. कितना था? 9. 9 - 2 कितना हुआ? 7. सो n माइनस r का फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल. समझा? यस. सो पहले ग्रुप पकड़ के फैक्टोरियल निकालो इनटू उस ग्रुप का फैक्टोरियल. क्या आएगा? उस ग्रुप का फैक्टोरियल. ना अगेन ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नो टू वॉवल्स टुगेदर. अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वॉवल्स साथ में नहीं चाहिए. तो जब भी नो टू वर्ड आता है, व्हाट आई विल डू? आई अरेंज द अदर पीपल. रिमेनिंग पीपल आई अरेंज. सो एल जी आर टी एच एम. मुझे पता है ए ओ आई तीनों नॉटी पीपल है, इनको साथ में नहीं बिठाना है. तो मैं क्या करूंगा? बाकी के पीपल को आई विल अरेंज. सो हाउ मेनी पीपल आर देयर? 6 people कैन अरेंज इन हाउ मेनी वेज? 6 people है और 6 चेयर्स होगी. सो दे कैन अरेंज इन 6 फैक्टोरियल वेज. दैट इज 6p6. 6 people कैन अरेंज देमसेल्फ इन 6 फैक्टोरियल वेज. कंडीशन क्या थी? इन्हें साथ में नहीं बिठाना है. तो मैं क्या करूंगा? दिस इज वन प्लेस, दिस इज वन प्लेस. ये अगर ये 7 रेड डॉट्स को मैं गिनता हूं, इन प्लेसेस में इन तीनों को बिठाया, तो ये 2 लोग कभी साथ में नहीं आएंगे. ए और ओ कभी साथ में नहीं आएगा, क्योंकि ए ओ आई और एल्स ए ओ आई. तो मुझे इन 3 लोगों को बिठाने के लिए हाउ मेनी प्लेसेस आई हैव नाउ? 1 2 3 4 5 6 7. So I have 7 places, but how many people I have? 3 people. So these 3 people can arrange in 7p3 ways. कैसे? A आया, A के पास 7 places है, तो O के पास 6 होगी, I के पास 5 होगी. That is nothing but 7p3. Understood? So in this way, if I make them seated, they will never be together. 2 vowels will never be together. ठीक है? Clear with this? Now consonants at even position. मेरे पास कितने लेटर्स है? 9 लेटर्स है. Let us make 9 dashes. इसमें से कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? ये बाकी के 6 कॉन्सोनेंट्स है ना. इन कॉन्सोनेंट्स को इवन पोजीशन पे बिठाना है. सो विच आर माय इवन पोजीशन? 1 2 3 4. Big problem. I have 6 consonants but only 4 even places. So I can place only how many consonants? 4 consonants. So 6 में से कोई भी 4 consonants यहाँ बैठेंगे. How many consonants? 4. So 6p4. क्या आएगा? 6p4. तो out of 6, 4 consonants have been placed over here. Now how many places are left? 1 2 3 4 5. है ना? 1 2 3 4 5 places are left. How many letters also left?
इन 6 में से कोई 4 बैठ गए हैं, so 2 are left, those 2 and these 3, how many people are left? 5. These 5 people can arrange anyhow, so 5 people can be seated in 5 factorial ways. 5 people can be seated in 5 factorial ways. ठीक है? Now spelling start O से होनी चाहिए and T से होनी चाहिए. तो बचे कितने लेटर्स? इसके पास कोई चॉइस नहीं है, दिस कैन बी फिल्ड इन वन वे. टी भी लास्ट में फिक्स कर दिया है, नो चॉइस, फिल्ड इन वन वे. सो रिमेनिंग 7 letters can move here and there anyhow. So 7 letters can be arranged in 7 factorial ways. That is 7p7. आया समझ में? Yes? Clear? Please go once again for this sum. You understand in a better way. If any doubts, please ask. Okay. Now next similar problem. In a group photograph, 6 teachers are in the first row. 6 teachers in the first row. So I can say 1, 2, 3, 4, 5, 6. 18 students in second row. I will not draw this. 18 students in the second row. In that there are 12 boys and 6 girls. 12 boys है, 6 girls है. If middle position is reserved for the principal and 1 position is reserved for the principal. ठीक है? And if no 2 girls are together, find the number of arrangements. कोई भी 2 गर्ल्स साथ में नहीं बैठनी चाहिए, because they will talk और फोटो खराब हो सकता है. या फिर boys also can trouble. Even we can say that boys also should not sit together. Even boys can also trouble. Okay? So it is no 2 girls. कोई भी 2 लड़कियां साथ में नहीं बैठनी चाहिए. तो हम गर्ल्स को बाद में बिठाएंगे. सबसे पहले टीचर्स. टीचर्स कैसे भी बैठ सकते हैं. कितने टीचर्स है? 6 टीचर्स. 6 teachers can arrange on 6 chairs as 6 factorial. 6 teachers, 6 chairs, so 6 factorial. Principal is being given the least choice, no choice at all. एक ही सीट है, वहीं बैठना है प्रिंसिपल को. तो प्रिंसिपल के लिए 1 factorial. ये टीचर्स के लिए आ गया, ये प्रिंसिपल के लिए आ गया. Now even boys, सबसे पहले बॉयज को बिठाना होता है, वरना बहुत मस्ती करेंगे and will be difficult to find them. So 12 boys के लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. So 12 boys at 12 places can be seated in 12 factorial ways. कितने boys है? 12. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. अब 12 boys को बिठा दिया. अब बारी आती है 6 गर्ल्स की. कितने गर्ल्स की? 6 गर्ल्स. इन गर्ल्स को ऐसे बिठाना है that they should not be together. तो मैं क्या करूंगा? इन गर्ल्स को I can make a girl sit here. 1. I can make a girl sit here. Here, here, here. These are the places where I can put chairs for girls. If they sit in these green places, they will never be together. कोई भी 2 लड़कियां साथ में नहीं आ रही है. देखो तो कितनी प्लेसेस हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 प्लेसेस है जहां पर मैं गर्ल्स को बिठा सकता हूं. How many girls I have? 6 girls. So girls can be seated in 13p6 ways. क्या आएगा? Girls can be seated in 13p6. मतलब 13 choices है girls को बिठाने की, but I have 6 girls. So 13p6 ways girls can be seated so that no 2 girls are together. Okay? After pandemic gets over, everything is safe. You can try this in your society also. You will have real fun. Okay? Few problems you will try. I will cover in the next lecture. Okay? Thank you.